Good evening to everyone. So let me share my screen. So let me know if you can hear me clearly and loud. So can you see my screen? That's good. So I think last time we started with congruence of triangles, and we have seen that how two triangles can be seen as congruency, means whether they are congruent or not. We can see that हम लोग देख सकते हैं. तो उनके लिए जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी यहाँ ए है और ये क्यू, राइट. एंगल बी और पी और सी और आर. सो उसी प्रकार से ए बी सी लिखेंगे तो यहाँ क्यू पी आर होगा. सो दैट्स द थिंग वी हैव टू कंसिडर. So let's go to the next problem. So if anyone has any question, so you can write in the chat box. If not, then I will move ahead. Okay. So we will see some solved examples. So let me take. Okay. In adjacent figures, parts of triangles indicated by identical marks are congruent. Okay. So if identical things are congruent, means equal. Identify the one-to-one correspondence of the vertices in which the two triangles are congruent and write the congruence in two ways. Okay. So state the reason whether the statement triangle XYZ is congruent to triangle STU is right or wrong. By observation, the triangles are congruent in the correspondence STU and XZY. So how this STU XZY came into the picture? So let's see angle S, right, and angle X. So S to X is mapped. So S and X are the corresponding points. So similarly, T is correspond to Z, right? So we can correspond to an U to Y, right? So this way we can make a congruency test, and we can correspond to the particular point. So S to X, T to Z, and U to Y. Though it looks like that they have shown in this way, but we have to see that which angles are congruent or which angles are equal. Okay, so this way these triangles are congruent. Congruent means they are similar or they are exactly equal. So let's move to the next thing, like triangle STU to the triangle XZY is one way, right? This is the one way we can write. So we started with S, then we went to T and then U, right? Similarly XZY. So corresponding points. So what is the another way? We can take we can start with another point. हम किसी और point से start करेंगे. जैसे is instead of S, we will start with U, right? You can write U as T. Similarly, यहाँ से कौन सा point होगा? Y, X, Z, right? So there is another way.
सो और एक वे से हम लिख सकते हैं, कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? और एक क्या वे हो सकता है? दिस इज द फर्स्ट वे, हमने एस से स्टार्ट किया, देन यू से स्टार्ट किया, अगर टी से स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? दो ट्राइंगल के नाम, सिर्फ नाम लिखिए। सो हमने एक बार एस से स्टार्ट किया, फिर यू से स्टार्ट किया, और what is the name of congruent triangle also? Means both the triangle, so that we can have the one-to-one mapping or one-to-one corresponding triangle also. So TUS is right. So in similar fashion, for the triangle in XYZ, what should be the sorry? So it's ZXY. Yeah, that's great. So here we can see that another way we can write is TSU and ZXY, right? So this way also we can write. So next is, if the congruence is written as triangle XYZ is congruent to triangle STU, it will mean that, what does it mean? That we have written according to corresponding points also. So side ST is equal to side XY, right? Or it's congruent. That's the right word. Congruent, side XY, right? So which is wrong? Side ST is side XY? No, right? We can see that side ST is not equal to side XY. So statement, we should write that corresponding XYZ and triangle STU is wrong. So you are getting the point here that we have to map according to the point to point correspondence. So what's happening here? So यहाँ देखिए x और s का तो मैप हो गया, y के साथ इन्होंने क्या किया है, y के साथ t को जोड़ दिया है, तो y और t, तो ये देखिए y और t एंगल सेम नहीं है, यहाँ क्रॉस का साइन है, यहाँ ये साइन है, सो दे आर नॉट इक्वल actually. So whatever the statement they have given is wrong, right? So हम लोग ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं, और हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि what is mean by एक्स वाई और एस टी, जैसे हमने देखा अभी एक्स वाई और एस टी इक्वल है क्या, नहीं है। सो हमने जो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल मैपिंग किया है दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, सो हम लोग उसे रॉन्ग करार देंगे अभी। ओके, सो इस प्रकार से ये कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट मैपिंग होती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ इन द चैट बॉक्स। Let's see here. In a given figure, the identical marks show the congruent parts. Okay, in this figure, congruence mark show किया है. State the correspondence between vertices of the triangle in which the two triangles are congruent. इसमें दो triangle कैसे congruent है वो बताओ, ऐसे कहा है यहाँ। So यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है, but we can map that out. So यहाँ देखिए A है, तो ये A के मतलब हम लोग ये ट्रायंगल पकड़ेंगे पहले, राइट? इस ट्रायंगल को देखेंगे और ये ट्रायंगल सेकंड है, ऐसा समझिए, दो ट्रायंगल अलग अलग से देखेंगे। सो पहले ये देखिए ए बी डी में, ओके, सो हम लोग ऐसा लिख लेंगे ए बी डी। हमेशा ऐसे ट्रायंगल के पॉइंट्स लिख लीजिए,
एंड क्या करना है फिर, अभी देखिए ए बी डी, ओके, ए बी डी। तो सिमिलरली यहाँ क्या है, ए डी सी होगा, ए सी डी होगा, या और भी कुछ हो सकता है, राइट। लेकिन अभी देखिए एंगल, ये तो फर्स्ट ये ट्रायंगल हो गया, राइट, जहां हम यहाँ नाम लिखते हैं ट्रायंगल को 1 और इसको देते हैं 2 नंबर। तो ये ट्रायंगल 1 का हो गया नाम। अभी देखते हैं कि सेकंड ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, ए डी सी। ओके, सो करस्पॉन्डिंग ए से कौन सा ट्रायंगल है, ए, राइट। देन बी जो है, बी से कौन सा ट्रायंगल है, सी। बी से एंगल मैपिंग करेंगे तो कौन सा आएगा, सी। सी इज इक्वल साइन है। और डी में देखिए वो तो 90 डिग्री का एंगल है। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये इस प्रकार से हमने ये मैच कर दिया। तो ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ओके, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। सो यहाँ देखिए अगर हम साइड ए बी और ए सी लेंगे, राइट, ए बी और ए सी वो भी कॉन्ग्रुएंट है। सो हमारा जो पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग है वो भी राइट है। सो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि दो ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। सो नोट, सो उन्होंने क्या लिखा है देखिए, इट इज कन्वर्शन टू इंडिकेट अ कॉमन साइड बाय सिंबल दिस। ओके, सो यहाँ देखिए अगर कोई कॉमन साइड होती है किसी भी ट्रायंगल्स को देखने के लिए, तो ये दो ट्रायंगल की ये कॉमन साइड है, सो इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। To show the pair of triangle is congruent, it is not necessary to show that all 6 corresponding parts and all 6 corresponding parts of two triangles are congruent. If 3 specific parts of one triangle are respectively congruent with 3 corresponding part of other, then the remaining 3 corresponding parts are congruent with each other. It means specific 3 parts of ascertain the test of congruence. तो यहाँ क्या होता है कि हमारे पास 3 साइड्स है या 3 भुजाएं, राइट, और 3 एंगल है। सो टोटल क्या है, 6 पार्ट्स है। ओके, सो इस प्रकार से ये इन्होंने कहा है कि 6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें यही दिखाना होता है कि 3 साइड्स और 3 एंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट। तो मतलब तो उन्होंने क्या कहा है यहाँ इस स्टेटमेंट में कि इसमें से कोई भी 3 पार्ट अगर हम दिखा देंगे कि कॉन्ग्रुएंट है, तो बाकी के 3 पार्ट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू। सो हमें हर एक 3 साइड और 3 एंगल को चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 3 पार्ट ले लीजिए, देन वी कैन असर्टेन दैट ऑल 6 पार्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो वही हम लोग, इट मीन्स दैट स्पेसिफिक 3 पार्ट्स असर्टेन द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सो कोई भी 3 पार्ट अगर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ कॉन्ग्रुएंट है, तो अदर 3 पार्ट्स आल्सो बिकम्स कॉन्ग्रुएंट। सो इसे टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। सो we have learned to construct a triangle. The 3 specific parts of triangle which define the unique triangle decide a test of congruence. Let us verify this. तो हम लोग अभी एक एक करके टेस्ट देखेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट इज 2 sides and the included angle. So हम कोई भी रैंडमली 3 पार्ट्स नहीं ले सकते, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक थिंग्स डिसाइड किया गया है। तो वन इज लाइक SAS टेस्ट। सो दो साइड्स
कोई भी ट्रायंगल की, और उन्होंने इंक्लूड किया हुआ एंगल। ओके, ये तीन को ही देखना है। अगर ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये देखना है यहाँ। सो वो कैसे होता है, लेट्स सी। ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, और ड्रॉ ट्रायंगल एल एम एन। ओके, the two pairs of their sides and the angles included by them are congruent. So यहाँ देखिए AB और AB and ML are congruent. वैसे ही BC और MN is congruent, और उनके बीच में का एंगल है जैसे एंगल M, और यहाँ है एंगल B, both are congruent. Okay, so अगर हम ये कॉपी करेंगे ये ट्रेसिंग पेपर पे एंड प्लेस द सेम ट्रायंगल ऑन LMN, तो सच वे दैट मतलब हम लोग एम बी को करस्पॉन्डिंग करना चाहिए और एन सी को, ठीक है, और एल ए को। अगर ये हम लोग आप अगर सेम ट्रायंगल लेके ट्राई करेंगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली इट्स ओवरलैप्स विद अदर, राइट। सो वी कैन नोटिस दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। सो यहाँ भी देखिए जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है वो ए और एल का है, और बी और एम का है, बी और एम, एंड देन सी और एन। ओके, सो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी हम लोग मैच कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ये हमने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे दो ट्रायंगल्स हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, राइट। सो अगर इनके दो साइड्स और उनके बीच में का एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एसएस टेस्ट, इट्स साइड एंगल साइड ऐसा कहते हैं। सो अगर कोई मराठी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए ये बा को बा टेस्ट कहते हैं, बाजू कोण बाजू। सो बा को बा टेस्ट, so this is one of the test. So whenever if you see those two triangles and two sides are congruent and their included angles are also congruent, then we can say that two triangles are congruent. Okay, so आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो सिमिलरली ये और टेस्ट है, हम लोग एक एक के साथ एक देखेंगे। सो similarly there is SSS टेस्ट, इट्स साइड साइड साइड। सो अगर दो ट्रायंगल है और उनकी भुजाएं अगर सेम हैं तो वो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। जैसे देखिए ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और एक्स वाई जी, राइट। सो यहाँ भी उन्होंने कहा है कि एल पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, ये दोनों इक्वल है, राइट। क्यू आर बिकम्स वाई जी, और ये है थर्ड। सो अगर आपको ये दो ट्रायंगल दिए जाए और उनमें अगर आपको कह दिया जाए कि पी क्यू एक्स वाई से इक्वल है और देन क्यू आर इज इक्वल टू जी वाई एंड आर पी इज इक्वल टू एक्स जी, देन अगर ये आपको दिया जाए तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इनके एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे Q, Q is corresponding to Y, right? And P corresponds to X and R corresponds to Z. So इस प्रकार के एंगल भी उनके सेम होंगे. So that's what it shows, that if two triangles are having equal sides, and then we can
definitely say that those two triangles are congruent. So similarly, we can, another test is ASA test. So यहाँ क्या है, two angles and their included side. So हमने first test में क्या देखा था, two sides and their included angle. But here it's angle, two angles and their included side. So यहाँ देख सकते हैं कि एंगल x है और एंगल z है, और उनके बीच में की भुजा जो उन्होंने बनाई है उनके बीच में की इंक्लूडिंग वो है एक्स जी. सो ये दोनों इक्वल है करस्पॉन्डिंग अनदर ट्राइंगल के एंगल और साइड से. तो अगर दो एंगल, इन दोनों ट्राइंगल के बीच में देखिए दो एंगल और उनके बीच में की इंक्लूडेड साइड अगर मैच करती है, so we can say that two triangles are congruent triangle. Okay, so अभी देखा हमने कि कैसे what does it mean. So ये जो दो ट्राइंगल है वो हम लोग कह रहे हैं कि अभी कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जो है, एक्स वाई करस्पॉन्ड्स टू डी ई, राइट, ये इक्वल है, और ये भुजा ए भी इक्वल है, और ये जो बचा है वो एंगल वाई, इट्स करस्पॉन्ड्स टू वाई ई, एंगल ई, राइट. सो इस प्रकार से ये दो ट्राइंगल के थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर इक्वल विथ अदर ट्राइंगल, राइट. सो इस टेस्ट में भी हमने देखा कि एंगल साइड एंगल इक्वल है एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के साथ, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट अदर थिंग्स आर आल्सो same. So out of 6 only 3 we have tested and we can say that all are congruent. Okay, so इस प्रकार से हमें all 6 मतलब 3 sides और 3 एंगल देखने की जरूरत नहीं है, या हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जैसे देखा कि साइड्स टेस्ट होने चाहिए या साइड्स इक्वल होने चाहिए या एंगल्स, या किस प्रकार से दो साइड्स और उनके बीच में का एंगल, या दो एंगल और उनके बीच में का साइड. ओके, इस प्रकार से अगर वो हम लोग चेक करेंगे दूसरे ट्रायंगल के साथ, अगर वो इक्वल है देन वी कैन डेफिनेटली से दैट बोथ आर congruent triangle. So let's move to the next test, that is AAS or SAA. The sum of measure of angles in the triangle is 180 degree. So sum of angles, right? So what does it mean, this statement? So अगर ये ट्रायंगल के बीच में के एंगल्स है, राइट, जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, राइट. सो ये ट्रायंगल के जो हम अगर मेजर करेंगे, तो ये तीन ट्रायंगल को अगर हम लोग मेजर करके उनका सम कर देंगे, जैसे ट्रायंगल ए, सॉरी एंगल बी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी. सो ये क्या है, ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं. ओके, तीन कोण हैं, तो तीनों कोण की जो एडिशन है वो कितनी होती है, हमेशा 180 डिग्री होती है. सो हियर अनदर क्वेश्चन केम्स like then what is the summation of all the angles in square, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है. सो क्या आपको पता है, कैन यू राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स. जैसे डिफरेंट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो उनकी समेशन होती है 180 डिग्री. तो सिमिलरली अगर 180 डिग्री इज फॉर ट्रायंगल, दैट्स ट्रू, लेकिन अगर रेक्टेंगल या हम रेक्टेंगल लेंगे या स्क्वायर लेंगे तो उसकी कितनी होती है, 360, दैट्स करेक्ट. सो अभी मतलब देर आर डिफरेंट वेज, देर आर फॉर्मूलाज कि हम लोग कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे एग्जाम के वक्त तो क्या कर सकते हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि समेशन ऑफ एंगल ऑफ
स्क्वायर और रेक्टेंगल इज व्हाट देन। तो यहाँ देखिए ये रेक्टेंगल है, मैं उसको दो में डिवाइड कर दिया। तो आपको ट्राइंगल का तो पता है, ट्राइंगल के सब एंगल्स की समेशन कितना होता है 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री, राइट। सो टोटल कितना हो गया 360। ओके, सो सिमिलरली अगर ये पेंटागन दिया जाए आपको, ओके, तो उसको भी आप डिवाइड करके देखिए। यहाँ क्या है, ये एक एंगल बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, एंड अनदर इज दिस इज it's some type of square. Okay, 360. So पेंटागन के लिए क्या 360 प्लस 180। तो इस प्रकार से जो भी ये है, जो भी फिगर है उसका हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉरी सम, ओके, 360 प्लस 180। जैसे ट्रायंगल के सारे एंगल्स की सम होती है 180 डिग्री, स्क्वायर में जाएंगे तो 360 होती है, अगर पेंटागन जाए तो 360 प्लस 180, इट्स कम अराउंड 540। और इससे आगे बढ़ेंगे हेक्सागन, राइट। हेक्सागन में देखिए ये एक एंगल है, एक एंगल है, एक एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, राइट। सो सॉरी, ये सारे 6 एंगल्स की अगर सम करेंगे तो क्या होगा 720। ओके, सो इस प्रकार से सम ऑफ ऑल एंगल्स हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इस टेस्ट पे आते हैं। दैट वाज जस्ट extra side things which I would like to share with you. So the sum of measure of all angles in the triangle is 180 degree. Therefore, if two corresponding pairs of angles in two triangles are congruent, then the remaining pair is also congruent. So दो triangle में अगर ओके, सो ये दो एंगल अगर इक्वल है, राइट, सो थर्ड जो थर्ड एंगल भी अपने आप वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, बिकॉज वी नो दैट 180 डिग्री में से अगर सेम चीज को अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ भी इक्वली एंगल होगा। सो अगर ये दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा, राइट। सो hence if the two angles and a side adjacent to one of them are congruent, अभी ये दो एंगल प्लस हमने ये बीच में वाली साइड देखी थी, राइट, इनके बाजू वाला कोई भी एक साइड, ओके, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसे भी कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो हमेशा हमें क्या देखना है, एंगल्स या साइड्स, राइट। सो यहाँ क्या है, दो एंगल्स और उनके बाजू वाली साइड, ये या ये कोई भी साइड अगर इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, देन दिस टू ट्रायंगल्स आर congruent. Okay, so it's bit confusing, angle triangle, but be means make your fundamentals clear that angles are inside the triangle and sides are this. So we have to make this congruent, or we have to see whether these are congruent or not, like side and angles. Then only we can say that these two triangles are congruent. Okay, so this is one test. So with corresponding parts of triangle, then condition for ASA test is fulfilled. So triangles are congruent. So ये क्या है, दो एंगल्स और साइड की टेस्ट। सो इस प्रकार से हमने 4 टेस्ट देख ली, राइट। सो ये है 5th टेस्ट। सो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, सो वेयर वन एंगल इज 90 डिग्री, राइट। सो अगर ये 90 डिग्री है एंगल, तो बाकी दो जो एंगल है उनका सम क्या होगा, या उनका एडिशन, अगर ये दो एंगल को हम लोग ऐड कर देंगे
राइट, दैट्स करेक्ट। सो अगर देखा जाए तो बाकी के दो एंगल्स की सम है वो 90 डिग्री होगी, और इसमें ये है 90 डिग्री, और तो बाकी के दो एंगल्स की सम भी 90 डिग्री होगी। सो यहाँ क्या देखते हैं, दिस इज देयर इज यूनिक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल्स है, डॉट टू साइड एंड हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट क्या कहती है कि डॉट टू एंगल राइट एंड ट्राइंगल्स such that side and the hypotenuse is one of the congruent। तो साइड, ये जो साइड है राइट, ये साइड और ये साइड एंड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमेशा सेम होना, मतलब कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देन इस एंगल से हाइपोटेन्यूस साइड, सो हाइपोटेन्यूस और साइड हमेशा कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो यहाँ हम तीन पार्ट क्या देखेंगे, हाइपोटेन्यूस है राइट, और साइड भी है एक, एंड राइट एंगल ट्राइंगल भी है। सो हम लोग वैसे तो तीन चीजें देख रहे हैं, लेकिन बाय these are the right angle triangles, so we know that one angle is 90 degree, right? So and these two sides including hypotenuse, right? So whenever we are testing for right angle triangles, we have to see that hypotenuse is congruent, and their one of the side is congruent, then these two triangles are congruent. Okay, so these are the tests which we use for testing the congruency of triangle. If you have any question, please you can ask in the chat box. Okay. So here are some examples. यहाँ देखिए, इन गिवन फिगर अभी ये कौन ये तीन साइड, ये इस साइड से है और ये इस साइड के साथ, मतलब पी आर इज congruent with US, then QR is corresponds to TS, right? So यहाँ कौन सी हम लोग टेस्ट से हम लोग कह सकते हैं कि these two triangles are congruent, so this is SSS because all sides are equal, and hence we can say PQR. We have to see that it is matching to corresponding points, so P is matching with U because PQ is UR is equal, PQ and UT, sorry, PQ and UT are equal, so accordingly we have to write corresponding points. So PQR corresponds to UTS, and this is by SSS test. Then ASA test. So these triangles, see, these two triangles where we can see the angles are equal and the included side, right? So angle, included side, and then included angle, right? So here also we can say DBA and DBC are congruent. So we have to correspondingly match, like DB is common here, then A is the extra point. So DBA and here DBC. So this way, these triangles are congruent. So which test we use? Angle, side, angle. In Marathi medium, I think it is ko bako. Okay, कोण बाजू कोण. यहाँ भी देखते हैं वन बाय वन. सो यहाँ देखिए, अगर ये सिंबल है, सो व्हाट डज इट मीन? दिस इज 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. और इसमें क्या कहा गया है कि hypotenuse. So given triangles are right angle triangle, one of the sides of the triangle is equal, right, incongruent with the side. So the additional information necessary is hypotenuse ln should be equal to hypotenuse EF. ln और EF इक्वल होने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिए. ओके, सो अगर ये इक्वल हो जाते तो हम लोग हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से इसको कह देते कि दीज आर
congruent. Okay, so what is the additional information necessary for this test is this and this should be congruent. Okay, so ये देखिए नेक्स्ट है ASA टेस्ट, राइट. सो ये दो ट्राइंगल को अगर हमें ASA टेस्ट से congruent कहना है तो what we need here, so angle they have given, right, and there is one included common side is there. So which angle we should see? This angle, right, because then we can say angle side angle, right. If we take this angle, this may not be right according to this test, right. We may have to use a different test, but as they have given that you have to make this congruent according to this test, then what is the additional information necessary, इसके लिए क्या additional information चाहिए वो हमें बतानी है. तो यहाँ ASA टेस्ट के लिए क्या है, एंगल साइड एंगल के लिए एक एंगल तो दिया है उन्होंने, साइड तो ये कॉमन है और कॉमन साइड है, तो हमें पता है कि सिंबल कैसे लिखना है. एंड देन एक एंगल हमें करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट करना है. सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग. So we will see some problems. I know we can quickly go through the this type of problem. So yeah, in problem number 1, which test we should use? Can you write in the chat box? So I think that everyone should participate in this quick quick quiz, we can say. And please do not look into the answers which are given below the chapter. Just try it by yourself so that I will come to know whether you are following it very well or not. If it is wrong, that's fine. You can just post in the chat box. So which test we should use for making these two triangles congruent? Can you write in the chat box? By which test these two triangles will be congruent? So, can you hear me very well? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? So what is the answer? So which test we should look here so that we can say that these two triangles are congruent?
So are you guys following me? Any answer? So yeah, someone has posted the answer. Any other any other one? Any other student who would like to answer? So these are the two triangles here. So one is common side there, right? So so we can see that how these two triangles can be congruent. So first is side, right? This is these two sides are equal and one side is common and included angle is there, right? So it becomes S is the side, right? Then again it comes angle, and then again this is common side, which is congruent. So it becomes SAS test. That's fine. Someone has tried. I'm happy that someone has tried about ASA test, but we unfortunately we can't apply here ASA test because we they have not given the information about this angle, right? So ASA would have been good if they have given the another angle, right? But they have given the side. So what they have given according to we have to answer. So let's try for next. So which test we should use here? So we know that this is the right angle triangle, right? According to this symbol. So for right angle triangle, they have given the specific one test. I'm just giving you a hint. So which test we should use here to see that these triangles are congruent or not? So if you have any question, you can ask me or you can post in the chat box. So yeah, any other students want to volunteer for to give this answer? Yes, someone is asking ASA and SSS test. Sure, I will go there. So these two triangles are like right angle triangles, and their hypotenuse is so hypotenuse is always in front of right angle. Okay, this is a 90-degree angle, right? So in front of that, the side is called hypotenuse. So here, two hypotenuses are given equal, right? And the one side. So by hypotenuse test, yes, these are two triangles are congruent. So I think there has been a request by a student about to repeat the this test, ASA and SSS test. So I feel if you are finding difficult to follow, it's just go with what the information they have given, right? So see here SSS test. So what does it mean? If they have given you two triangles, right, and they give you that PQ is PQ is congruent to XY and QR congruent to YZ and RP is equal with this. So these are the three sides are equal. Hence, we can say that these two triangles are congruent. Similarly, for ASA test,
angle, this is the side, and this is the angle. So corresponding these angles in other triangle, these are the equal or congruent angles and side and angle, right? So we can say that these two triangles are congruent according to ASA test. So yeah, so always see that what's the information they have given, and from that check whether it matches with SAS, SSS, ASA, AAS, and if it is right angle triangle and hypotenuse is given the um, congruent, then we can go for hypotenuse test also. Okay, so this way we have to look into the uh, different tests. So uh, for fifth problem, uh, which test you will use here? So just try to write all the tests, and you can just go one by one, right? Or hypotenuse. It is not right angle triangle, so we are not going with that. So yeah, someone has given the answer SAA. That's correct. Any other test we can use here? That's correct, SAA, because we can see that clearly SAA. Yeah, that's another answer is angle. Uh, this is the common side again, and this is angle again, right? So this way we can, as this information is given, because these are the information given by this is the problem setup, right? So we can go for another test also, SAA or ASA test. There is no harm in that. Anything you can think of, you can make these triangles congruent. Okay, I think we know about this. I'm not going into the details about this because they have given the same thing, which we have discussed in the detail. That these are the different angle test. Okay. Mm, yeah. So for more information, they have given some information. If two sides and angle not included by them are congruent, okay, two sides and their angle, right? Corresponding parts of the triangle will, these two triangles will be congruent. See the adjoining figure in triangle ABC. Okay, this is a triangle ABC and triangle ABD. Okay, AB is common side, and BC and BD. BC and BD are equal. Angle A is common, but it is not included by those sides, right? So these two sides are common, like AB is common, BD and BC is congruent, right? So here angle included by those sides are not congruent, right? So what is happening? These two triangles are not equal or not congruent. All right. Therefore, if the two sides and angle not included by them are congruent, so something like S A. So this is not the test. Okay. So if two sides and angle not included by them are congruent, then these two triangles are not necessarily to be
congruent. So here see, in adjacent congruent sides of ABCD are shown by identical marks. Identical marks से हमने ये sides इसको mark कर दिए हैं. तो यहाँ देखिए ये दो sides तो congruent है, plus ये जो common है वो भी congruent है. तो ये हमने side test लगा दी है यहाँ, और उससे हमने ये कह दिया कि these are the congruent triangles, right? And for corresponding matching, you know, ABD, CBD, or ADB, ADB we can write in this fashion also, right? So CDB. So हम कैसे भी लिख सकते हैं उसको, तो वही उन्होंने different styles कैसे लिख सकते हैं, and we have to see, and we have to be very careful that which points corresponding to matching point to the another triangle. That's the thing we have to look into. Okay, so yeah, then you can try this practice set 13.2, and if you have any question you can ask me in next lecture. I think I will stop today here. If you have any question, you can ask me in the chat box, or otherwise have a great evening. Take care. Yeah, sure. You can ask me any question if you have. Topic 8. Okay. Yeah, go ahead. What is the question in topic 8? So, yes, what is the question? Is said 8.1 and question 2. Construct the following quadrilaterals of given measure. D is 4.5, 6.5, 5.5, D is 7.2, 7.8. Okay, so what is the question here then? So you have to draw this. Yes, sure. Just remind me in next lecture. I will go through this problem also. Okay. Thank you. Have a great evening to everyone, and we can leave this class. Hello, Pratana. You can drop off or hang up the call. Hello, Pratana. Can you drop off from the call? Can you hang up the call?